नॉर्मल में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म एंड इन स्लोप फॉर्म, ये हमने डिस्कस किया था, राइट? यस सर। नेक्स्ट है इसमें को नॉर्म। अच्छा, मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क किया सॉल्व? Oh sir, no, I didn't know that time, sir. So because my school exams are going, so my school exams are going on right now. So तो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं नॉर्मल के। if normals of parabola y square equal to 12x and y square equal to 4x, drawn at endpoints of LR are tangents to circle x square plus y square minus 6x plus 4y plus c equal to 0. Find c. देखो सिंपल इक्वेशन है, ट्राई करो। For this parabola, endpoints of LR are 1, 2 or 1, minus 2. And equation of normal. so if it's normal there, then you find the distance to the center of the circle, and then you find radius should be equal that. So then you find secant value. Right. Correct. Equation of normal in point form is y minus y1 equal to minus y1 upon 2a times x minus x1. तो ये वाला इक्वेशन देखो, and this equation is simplified किया तो x plus y equals to 3.
सी का वैल्यू 11 आ जाएगा। और ऐसे ही सेकंड नॉर्मल के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला सर्कल एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक तो है नहीं। तो देखो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ आ गया। Yes, sir. इक्वेशन ऑफ सेकंड नॉर्मल y plus 2 equal to plus 2 upon 2 x minus 1 हो गया x minus y equal to 3। अच्छा बट सेम ही आंसर आ रहा है। ओके, बिकॉज सर्कल का सेंटर जो गिवन है वो 3, -2 है। तो इसे जब p लिखेंगे तो ये 3 + 2 - 3 अपॉन √1 + 1 यानी कि सेम ही बन जाएगा। तो c का वैल्यू वापस से 11 ही आ जाएगा। ओनली वन सर्कल ही पॉसिबल है। ठीक है। Yes, sir. करो ट्राई। तो हमें रिजल्ट्स जो है वो y इक्वल टू एक्स मतलब y² = 4x के थोड़े याद होते हैं, और x² = 4y के वजह से अपन को बनाने पड़ते हैं उनकी हेल्प से। तो हम इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि पैराबोला जो है वो y = x² के प्लेस पे y² = x ले लिया, x = y² ले लिया। तो जो ये पॉइंट क्वेश्चन ने बोल रखा है ये अब 3/2, 0 बन जाएगा। अगर हमने x एक्सिस को y से, y को x से रिप्लेस किया तो ऐसा करने से सरकम रेडियस जो एक लेंथ है वो चेंज नहीं होगा। ऑल्दो हम डायरेक्टली y = x² के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, बट डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर मान लो कोई और पैराबोला है तो उस सिचुएशन को हम स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड क्वेश्चन ने लेंथ या इस तरह का कोई चीज पूछा है जो शिफ्टिंग से या रोटेशन से चेंज नहीं हो रहा। तो y² = x पैराबोला ले So लिया। if we shift the parabola to standard form, then we'd have to shift the point also, right? No, this is already standard parabola, but this is second standard parabola, and we have changed it to first parabola. So we have to make the shift in the point also now. हाँ, अगर कोई शिफ्टिंग वाला केस है तो पॉइंट भी शिफ्ट करना होगा, राइट। For this parabola, equation of normal is
y equal to mx minus 2am minus am cube. This normal is passing through 3/2 comma 0. तो ये हो जाएगा 0 equal to 3/2 m minus half m minus 1/4 m cube. तो m का वैल्यू 0, 2 और -2 आ गया. अगर m मिल गया तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स am² माइनस 2am से डायरेक्टली आ जाएंगे. तो m 0 पे 0,0 आ गया, m 2 पे 1,-1 आ गया और m -2 पे 1,1 आ गया. ये अब PQR पॉइंट्स हो गए. क्वेश्चन है इन PQR पॉइंट्स के ट्राइंगल का सर्कम रेडियस फाइंड करने को बोला है. बताओ कैसे करेंगे. So find circumcenter, so then that will give center of circle, and then find a perpendicular distance from that to like form equation for any one of the lines of the triangle using 2-point form. Find perpendicular distance to that gives radius. Then we have center and radius. So ठीक है, बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो ये डेटा गिवन है, जो ये पॉइंट्स आए हैं, ऑब्जर्व करो कुछ सिंपल हो रहा है. so diameter points are given. So Yes, these points will form a right angle triangle. so 1 comma -1 to 1 comma 1 is diameter. So Diameter, right? we The can use midpoint of that diameter. is circumcenter. In this case, situation ये है 1,1 and 1,-1. तो 1,0 is circumcenter and 0,0 vertex. Circum radius 1 आ गया. ठीक है. Next question. If two normals of parabola y² equal to 4ax intersect each other at right angles, then chord joining their feet passes through a fixed point. That point is so is today the last lecture in parabolas? क्या ये वाला come again? So is today the last lecture for parabola? मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं कितना कवर होता है आज. ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, बस कुछ क्वेश्चंस कराना बचेगा. अगर बचेगा तो थ्योरी वाइज कंप्लीट हो जाएगा. Okay, so maximum this lecture and next lecture. राइट.
So in this question, two normals of parabola intersect each other at right angle. How will you use this condition? Sir, I think we did this question last class, sir. Pakka? Wait, sir, let me check. Oh, no, sir, no. We did something different, sir. We did the normal of chord of parabola subtends right angle at. That is a different question, right? So if we can, they intersect each other at right angle, then m1, m2 equals -1. So we'll get the cubic equation for slope from that. And so then I don't know the next step. So In this case, statement is saying that chord joining their feet passes through a fixed point. We have already star marked a property. If chord joining T1 and T2, if T1, T2 is equal to some constant K, then chord joining T1 and T2 always passes through a fixed point. And that fixed point is for first parabola. If T1, T2 is equal to K, then chord joining T1 and T2 always passes through a fixed point. That fixed point is, पता है? माइनस ए के कॉमा जीरो, राइट. तो ये वाला पॉइंट यूज कर लेंगे यहाँ पे बस. If feet of normals are T1 and T2, then slope of normals are for normal 1 by T. So minus T1 minus T2. Minus T, right? Minus T1 and minus T2. Given minus T1, that is M1, minus T2, that is M2, equal to -1. This gives T1, T2 is equal to +1. नहीं, -1. If T1, T2 is equal to -1, अरे यहाँ तो सिंपल ही आ गया. T1, T2 equals to -1, तो फोकल कॉर्ड बन गया. Yes, yes. The point would be plus a comma 0 and here. Right. Therefore, chord passes through focus a comma 0. इसमें एक और पार्ट ले लेते हैं. Also find minimum distance between these two curves. पहले तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो, फिर सेकंड बताऊंगा मैं.
सर्कल एंड पैराबोला का नॉर्मल, तो पैराबोला का नॉर्मल तो अपन डिस्कस कर ही रहे हैं अभी। सर्कल का नॉर्मल क्या होता है? So it's a line perpendicular to tangent passing through center, sir. तो सिंपली वी कैन से लाइन पासिंग थ्रू, एवरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल इज इट Yes, नॉर्मल। yes, sir. तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन को 9,6 से पास करने वाला वो नॉर्मल बताना है जो पैराबोला पे भी, मतलब वो लाइन बताना है जो पैराबोला पे नॉर्मल है, राइट? Yes, sir. So we can use a point slope form and then we find equation for m in terms of Point slope form, why we will use slope form of normal of parabola? Yes, sir. So, point slope form of for circle, sir. We'll take center as 1 point and put slope m. Then we'll use slope form of parabola and then solve simultaneously, sir. No need of that, na. First, okay, let's say the question is find equation of common tangent of parabola y square equal to 4x and circle x square y square equal to a square. Method क्या होगा? Common tangent. So put y square equals to 4x in the नहीं नहीं नहीं, तुम bottom. मीनिंग रॉन्ग समझ रहे हो। देखो, कॉमन टेंजेंट ये पैराबोला है, ये सर्कल है, तो ये जो कॉमन टेंजेंट बनेगा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग होगा दोनों। Oh, understood, sir. Understood, sir. सेम यहाँ इन दिस केस भी अगर अपन डायग्राम से देखेंगे तो ये 9,6 अब Understood, इनसाइड sir. है। One line that intersects the parabola and the center of the circle. हाँ, तो ऐसे कुछ बनेगा। अगर 9,6 आउटसाइड है तो ये कॉमन नॉर्मल है दोनों कर्व का, करेक्ट? नाइन कॉमा सिक्स ऑन दिस कर्व लाई कर रहा है वैसे तो अगर हम डायग्राम प्रॉपरली बनाए तो ये सिचुएशन है। इन दिस केस ऑफ द सेकंड वाला क्वेश्चन आल्सो फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, जीरो ही हो गया। तो चलो सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ भी, क्योंकि अभी सर्कल जो है वो पैराबोला को इंटरसेक्ट ही कर रहा है, चलो लिख तो लेते ही हैं, आंसर जीरो हो जाएगा। बट कंसेप्ट नहीं लगा, मैं दूसरा कंसेप्ट बताऊंगा अभी। बट क्वेश्चन का मेथड क्या अभी? नॉर्मल ऑफ पैराबोला इज y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। दिस लाइन passes थ्रू 9,6, तो 9,6 से पास कराया, 6 is equal to 9m minus 2m minus m क्यूब। तो m क्यूब माइनस 7m प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। तो क्यूबिक को सॉल्व करो। सॉल्व करने का मेथड हिडन ट्रायल से विल गेट फर्स्ट फैक्टर और वो m इक्वल्स टू 1 आ रहा है, देन m माइनस 1 से डिवाइड किया तो ये m स्क्वायर और 6 आ रहा है। मिडिल टर्म क्या आ जाएगा अगर k लिया तो k m यानी कि -6 माइनस m, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 0, m माइनस 1 m माइनस 3 So m -3, 1 and 2. राइट। -3 मेरा +3 आ रहा है, So I'm getting एक -3, 1 and 2. So -6m एंड प्लस, हाँ करेक्ट, प्लस m है ये। m का वैल्यू 1 पुट किया तो y इक्वल टू x माइनस 3, m का वैल्यू 2 पुट किया तो y इक्वल टू 2x माइनस 12 एंड y इक्वल टू माइनस 3x। 27 प्लस 6 कितना हो गया? 33।
In this question to minimum distance 0 हो गया because curve and parabola and circle are intersecting each other. ठीक है, but एक बार ये तो completely देख लो, clear है पूरा solution? Yes, so, but so for what the case where the circle doesn't intersect the parabola, then how would we find minimum distance? If circle is not intersecting the parabola, if any two curves which are not intersecting each other, then shortest distance always lie along their common normal. For two non-intersecting curves, shortest distance between them always lie along their common normal. तो मान लो ये सर्कल है और ये पैराबोला है और ये सर्कल है, तो इनका जो शॉर्ट डिस्टेंस होगा वो इस लाइन के अलॉन्ग हो जाएगा जो सर्कल के सेंटर से पास करिए, पैराबोला पे नॉर्मल है, और पी क्यू इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, Okay, so we find the foot of, we find where the line is P, then we find distance center to P and then subtract radius. how will you find P? So they've given now the point where the normal intersects the parabola. Again, in the information only circle ka equation and equation of parabola is given. Then how will you find P? Okay, let's say question is find shortest distance between y square equal to 12x and So we'll use like am square comma minus 2am to find P. right, correct. In this case 4x कर लेते हैं, कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी किससे सिंपल हो रही है. अभी मैंने लिखा नहीं है कुछ, यहाँ पे मैं लिखूंगा k क्या है जिससे कि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए. तो y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस m3. अगर k को a को 1 लिया तो 6m माइनस 2m. ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये सर्कल है. जो पैराबोला पे पॉइंट आएंगे वो 0,0 am स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 और 4,4 ये पॉइंट्स आएंगे. ठीक है, और डायग्राम ये है. Now from center we have drawn 3 normals like this. तो अब बताओ लास्ट स्टेप की फाइनल आंसर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या होगा. So center to 0,0. So the shortest. नहीं, हमें सारे डिस्टेंसेस फाइंड करने होंगे. इन दिस केस o या o बोल, चलो मैं इसको o ही बोल देता हूँ. So there's no shortcut. We have to No, check each place. OC distance is 6, PC distance is 16 plus 4. नहीं, 16 plus 16. 6 minus 4, 4. 4 plus 16. और देखो ये √20 आ रहा है एंड PC डिस्टेंस इज लेस, और ये सेम RC डिस्टेंस भी सेम ही आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस लेस है.
Therefore, D minimum is root 20 minus 1. Got it? Yes, sir. मिनिमम डिस्टेंस ओनली ये वाला ही है, तो हमने रेडियस को हटा दिया. So for any two curves, shortest distance always lie along their common normal. Let's say क्वेश्चन में मान लो ऐसे है कि एक पैराबोला गिवन है और एक लाइन गिवन है, तो समझ आ जाएगा क्या करना है. Yes, sir. Find find perpendicular, like common normal of the two, sir, and then find foot of that line and then find perpendicular distance from like P to the line. Find shortest distance between y square equal to 8x and line x minus 2y. ये लाइन इंटरसेप्ट नहीं करनी चाहिए. x इंटरसेप्ट को नेगेटिव ले लेना है, y को पॉजिटिव ले लेना है. और भी ऐसा कर लेते हैं. 2x minus y equal to -8. हाँ, अभी क्विकली विद इन 1 मिनट आंसर बताओ. So, okay, in the line, the slope is 2, which means the slope of the normal will be -1/2. So, if the slope of normal Okay, is... कैलकुलेशन करके आंसर बताओ. Okay, so 1 second. So 1 second, sir. So 7 divided by √5. ये नॉर्मल के डिफरेंट क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट है को नॉर्मल पॉइंट्स. अभी जो हमने डायग्राम बनाया था ना, ये वाला, इन दिस केस नॉर्मल्स एट p q and r, these normals are concurrent. The point p q and r are called co-normal points.
और ये कोई m पॉइंट पे लेट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो p q and r आर कॉल्ड कोनॉर्मल पॉइंट्स। अब कोनॉर्मल पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है कि अभी हम m वाले पॉइंट को कुछ h कॉमा के ले लें, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभी हम अगर फर्स्ट पैराबोला की बात कर रहे हैं, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू। डायग्राम के अकॉर्डिंग तीनों नॉर्मल जो है वो h कॉमा के से पास कर रही है, तो इसको h कॉमा के से पास कराया, तो ये हो गया k इक्वल टू एम एच माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू। और ये जो m में क्यूबिक है, ए एम क्यूब माइनस h माइनस टू ए टाइम्स m plus k equal to 0 if roots of this cubic are m1 m2 and m3, then m1 plus m2 plus m3 का वैल्यू इस क्यूबिक से क्या आ रहा है? So h minus 2a by a. So no, sir, 0. को नॉर्मल पॉइंट्स फॉर ऑन फर्स्ट पैराबोला प्रॉपर्टी हो गई कि तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स पे ड्रॉन नॉर्मल्स के स्लोप्स का सम 0 होगा। ठीक है, अभी तो हमने स्लोप के टर्म्स में इक्वेशन लिया है। इफ वी हैव टेकन द इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, देन रिजल्ट विल बी t1 plus t2 plus t3 equal to 0 because for normal m plus t equal to 0, t equal to minus m। ठीक है, if t1 plus t2 plus t3 is equal to 0, so we can say that note, two notes हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, centroid of triangle formed by co-normal points of a parabola always lies on axis of parabola। देखो ये समझ आएगा स्टेटमेंट। So can you explain the statement? फॉर को नॉर्मल पॉइंट हमें ये रिजल्ट जो है वो याद रखना है फॉर फर्स्ट पैराबोला। एंड स्टेटमेंट इज सेंटरोइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय को नॉर्मल पॉइंट्स, दैट इज ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पी क्यू आर। Yes, sir. Centroid of this triangle always lies on axis of parabola, because if p q and r are 81 square comma 281 82 square comma 282 and so on, then y coordinate of centroid will be 2a times t1 plus t2 plus t3 by 3, or since t1 plus t2 plus t3 is 0, the y coordinate is 0. If y coordinate Understood, is sir. Then it lies on the axis. right, and second point जो है for 3 real and distinct normal. Earlier we have discussed that maximum 3 normals can be drawn from a given point on the parabola, but maximum है वहां तो exactly 3 real and distinct normals कब मिलेंगे? For 3 real and distinct normals from h comma k to parabola y square equal to 4ax. Conditions are h should be greater than 2a, and second condition is k square is less than 4 upon 27a times h minus 2a whole cube। ठीक है, ये कंडीशंस आप सोच के देखो कि कैसे कहां से आई हैं ये कंडीशंस। So you got from the discriminant of the equation. So the h greater than 2a you got from coefficient of m.
ने तो कोफिशिएंट ऑफ m को पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों किया? I don't know, sir. For three real and distinct normals, we need all three roots of this cubic equation should be real and distinct. Therefore, graph of this cubic expression should be like this. So that this Yes, graph sir. intersect x-axis at three real and distinct point. तो कोई भी क्यूबिक का ग्राफ ये फिक्स करने के लिए अपन को फर्स्ट पॉइंट तो चाहिए कि इस ग्राफ में एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए तो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो किया, तो एक जो क्वाड्रेटिक बनेगा, दिस क्वाड्रेटिक शुड हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये बता, ये आइडिया है ना कि इफ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, देन Then कौन से पॉइंट, derivative equals 0. Yes, sir. हाँ, तो एवरेज एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो इसके से एम में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। एंड सिंस वी नीड रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम And मिनिमा, discriminant तो would be equal रूट्स to ऑफ, 0. हाँ, तो वहां से तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा h इज ग्रेटर देन 2a। फिर उसके बाद लेट्स से कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा जो है वो कुछ अल्फा और बीटा पॉइंट पे है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग एफ ऑफ अल्फा इनटू एफ ऑफ बीटा शुड बी लेस देन जीरो, बिकॉज अगर ग्राफ ऐसे बन गया तो भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट इन दिस ग्राफ देयर इज ओनली वन रियल रूट, रिमेनिंग टू रूट्स आर इमेजिनरी। Yes, sir. ठीक है, तो दोनों जो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है इनका y कोऑर्डिनेट अपोजिट साइन का होना चाहिए, वहां से ये वाली कंडीशन आती है। ठीक है, और ये अभी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में और आ जाएगा तुम्हारा ये वाला पॉइंट कि कब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा क्या, बट अभी के लिए हमें ये वाली कंडीशन जो है वो याद रखनी है कि इफ फ्रॉम अ पॉइंट h, k three real and distinct normals can be drawn, then h is greater than 2a and k square is less than 4/27 a times h minus 2a whole cube। और जस्ट एक आइडिया रखने के लिए कि हम जब इन दोनों कंडीशंस को ड्रॉ करेंगे, these conditions are for only first parabola। तो जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स कुछ इस तरह से आ जाते हैं, ये a है तो ये 2a यहाँ पे हो गया, कि वो पॉइंट्स इस रीजन में लाई करने चाहिए, और ये है 2a, 0 वाला पॉइंट। प्रॉपर तो अभी भी नहीं बनाया मैंने, बट ऐसे कुछ, दिस इज 2a, 0। तो अगर पॉइंट इस इन ब्लू कर्व्स के राइट साइड में लाई कर रहे हैं, देन ऑलवेज वी कैन ड्रॉ थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स। एक और प्रॉपर्टी है, हम उसको So, क्वेश्चन में, हाँ, so what is the blue sketch you've drawn on the graph? if point h comma k is here, then we can draw exactly three real and distinct normals on this parabola। और ये h should be greater than 2a, तो 2x कोऑर्डिनेट 2a के राइट में आना चाहिए कहीं, और k स्क्वायर इज लेस देन दिस नंबर 4/27 टाइम्स h minus 2a होल क्यूब। तो k स्क्वायर का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग जब मतलब इस वाले ग्राफ को ड्रॉ करोगे, कि ग्राफ का मतलब इसका लोकस जो है वो y स्क्वायर इज लेस देन 4/27a x minus 2a होल क्यूब ऐसे बनेगा। तो Yes, sir. y
स्क्वायर है तो दिस ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो वो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता है जो मैंने ब्लू में मार्क किया है। तो अगर पॉइंट इस रीजन में लाई कर रहा है देन we can draw exactly three real and distinct normals on first parabola. क्वेश्चन भी है और प्रॉपर्टी भी है। शो दैट circle of triangle formed by co-normal points of a parabola always passes through vertex. ठीक है, को नॉर्मल पॉइंट्स को जो अपन बात कर रहे हैं अभी ट्रायंगल पीक्यूआर, circle of that triangle PQR always passes through vertex of the parabola. तो अभी अपन ने पैराबोला को प्रूव करने के लिए फर्स्ट पैराबोला अज्यूम किया। सर्कल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c मान लिया। अब ये सर्कल तीनों को नॉर्मल पॉइंट से पास कर रहा है। लेट द को नॉर्मल पॉइंट्स बी t1 t2 and t3। therefore t1 plus t2 plus t3 0 हो जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स ऑन फर्स्ट पैराबोला t1 plus t2 plus t3 0 हो गया। Now these 3 points which are 81 square comma 281, 82 square comma 282 and 83 square comma 283, all these 3 points lie on this circle। तो हम इस इन पॉइंट्स को सर्कल पे पुट कराएंगे। तो पॉइंट a t square comma 280 where t is equal to t1 t2 and t3 lie on this circle। कराया तो ये हो गया a t square whole square 280 whole square 2g 80 square plus 2f 280 plus c इक्वल टू 0। ये अगर देखें तो डिग्री 4 में इक्वेशन है और डिग्री 4 की जो इक्वेशन है इसके 3 रूट्स तो हमें पता ही है कि t1 t2 t3 होंगे। फोर्थ रूट नहीं पता, बट फ्रॉम दिस इक्वेशन बताना t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 का वैल्यू क्या आ रहा है। So 0 आ रहा है, zero, t क्यूब है ही sir. नहीं। No t cube term. t1 प्लस t2 प्लस t3 ऑलरेडी 0 था और t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 भी 0 आ गया। तो t4 का वैल्यू 0 हो गया और t4 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट बनेगा 84 स्क्वायर कॉमा 284 वो 0,0 पॉइंट ही बन जाएगा एंड 0,0 पॉइंट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है। तो सर्कल इज पासिंग थ्रू वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। कोई भी क्वेश्चन और उसका प्रूफ समझ आया। Yes, sir.
ट्रू फॉल्स करके लिखते हैं इक्वेशन। ट्रू और फॉल्स फ्रॉम पॉइंट 4,3 from point 3,4 exactly 3 real and distinct normals can be drawn to parabola x square equal to 4y। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। और वो जो कंडीशन थी, एक बार इसका 3,4 है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, और कंडीशंस ये हैं। So what's the equation of the parabola again, sir? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड Okay. पॉइंट इज 3, तो इन दिस केस पैराबोला सेकंड वाला है, और जबकि वो जो रिजल्ट था वो फर्स्ट पैराबोला के लिए था, ये ध्यान है ना। तो विल अगेन इंटरचेंज एक्स एंड वाई, तो पॉइंट हो गया 4,3 एंड पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और अभी यूज करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन था h इज ग्रेटर देन 2a, तो इन दिस केस 4 इज ग्रेटर देन 2, करेक्ट बात है। सेकंड था k स्क्वायर इज लेस देन 4/27a टाइम्स h माइनस 2a होल क्यूब, k स्क्वायर is less than 4/27a h minus 2a whole cube। ये तो 343 is less than 32 रॉन्ग लिखा हुआ है, तो गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी देखना है कि कौन सा पैराबोला गिवन है, और इस क्वेश्चन में अगेन हमने अगर सेकंड पैराबोला को फर्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो क्योंकि नंबर ऑफ नॉर्मल्स की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो आंसर आ जाएगा कंडीशन लगा के, पॉइंट को भी चेंज कर लेंगे। नाउ लास्ट है प्रॉपर्टीज और हाइलाइट्स ऑफ पैराबोला। If tangent and normal at P on parabola intersect its axis at T and G, where S is focus। बताओ कैसे प्रूव करोगे। Tangent and normal at point P, तो P is any point on the parabola,
So we'll take this point P in terms of parameter. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P याद है, बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म. So my audio is lagging, so can you repeat what was the question, sir? Equation of tangent in parametric form on first parabola. So ty equals x plus t square. AT square. Yes, sir. And equation of normal in parametric form. So y plus tx equals at cubed plus 2at. So from these equations, we'll get point T and G. Put y equal to 0. X क्या आ गया? Minus AT square comma 0. And in this case, x is 2a plus AT square comma 0. ठीक है. फोकस ऑलरेडी पता ही है, a comma 0 है. तो हमें T मिल गया, G मिल गया, S मिल गया और P AT square comma 2AT है. तो SP इक्वल टू ST इक्वल टू SG प्रूव करने के लिए क्या करें? So we have the points, then we can just find distance between the two sides. वो तो एक ऑब्वियस सा मेथड हो गया जो बहुत लेंथी है कैलकुलेशन वाइज. सिंपल मेथड बताओ. So it forms a circle, sir. इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट ये यार है. ठीक है. तो अगर एस टी और जी का मिड पॉइंट हो गया, वैसे तो अब ये भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी मुझे. If S is midpoint of T and G, then we can say that S is circumcenter of triangle PTG. Therefore, SP equal to ST equal to SG. देखना समझ आया क्या? बिना डिस्टेंसेस फाइंड किए. तो हमने S बाय ऑब्जर्वेशन देख लिया कि T एंड G का मिड पॉइंट है. सिंस PTG ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस TG है, तो S हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट सरकम सेंटर हो गया. सरकम सेंटर का ऑल थ्री वर्टिसेस से ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस होता है. तो SP ST और SG डिस्टेंसेस इक्वल हो गए. वो बात अलग है कि अपन को पता होता है कि PS इक्वल टू PMB होता है. तो यहाँ पे अगर अपन इक्वल टू PMB लगाएंगे तो भी चलेगा. प्रॉपर्टी 2. और तो वैसे अपन ने ऑलरेडी नोट किए हैं प्रॉपर्टी, पर चलो एक साथ नोट कर लेते हैं. प्रॉपर्टी इज पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट intercepted between point of contact and the directrix always subtends right angle at focus.
PQ is portion of tangent intercepted between point of contact and directrix, and this portion subtends right angle at focus. ये अपन ने ऑलरेडी जब टेंजेंट डिस्कस किया था तो प्रूव किया हुआ है. थर्ड पॉइंट, tangents drawn at end points of a focal chord are always perpendicular to each other and intersect at directrix. Hence, a circle described on focal chord as diameter always touches directrix. Foot of perpendicular from focus. So can you scroll up a little bit, sir? No, yes, sir. Well, sir, can you go up? I need to copy the diagram for point 2. We have already proved this property after equation Which one? of tangent. Done, sir. In point number 3, diagram is clear. Yes, sir. Fourth, foot of perpendicular from focus on any tangent always lies on, बताओ. So on directrix, right, sir? On tangent at vertex, and the reflection lies on directrix. Therefore, tangent and normal at point P are angle bisectors of lines PS and PM. PS and PM वो स्टैंडर्ड लाइन है जो पैराबोला का डेफिनेशन में यूज करते हैं अपन, और डायग्राम ऐसे कुछ है.
So in this case, tangent is drawn at point P. S is focus, A is vertex, N is foot of directrix, and M is foot of perpendicular from point P on the directrix. जब अपन सॉल्व करते हैं तो पॉइंट एस से टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स जो इन दिस केस वाई एक्सिस पे आ जाता है क्यू पॉइंट, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट एस जो है वो पॉइंट एम बन जाता है. ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एस आर सिमिलर ट्राइंगल्स if these are in fact congruent triangles. So if these are congruent triangles, so these two angles are equal. Therefore tangent at P is angle bisector of PS and PM lines. Since tangent and normals are always perpendicular to each other, and both the bisector lines between two lines are also always perpendicular to each other, so if one angle bisector is this tangent, then other angle bisector will be normal at point P. तो ये भी एंगल बाइसेक्टर है एंड टेंजेंट भी एंगल बाइसेक्टर है. और यहां से फिर पैराबोला का रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बन जाता है कि देयरफॉर एनी रे originating from focus will become parallel to axis of parabola after getting reflected by it. इस तरह से और इसी डायग्राम में एक और प्रॉपर्टी भी है, वो है a circle described on focal radius as diameter always touches tangent at vertex. Because tangent at vertex पे right angle बनता है. A circle described on focal chord as diameter always touches tangent at vertex. ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी जो तुम्हें याद आ रही बताओ. No, sir. Nothing is coming to mind. हार्मोनिक मीन से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी? वन अपॉन पी एस प्लस वन अपॉन क्यू एस इक्वल टू वन अपॉन ए. 1 upon. Oh, yes, Same. sir. Yes, sir. सेमी लेटस रेक्टम. Harmonic mean of focal distances of a हाँ. focal chord are always equal to सेमी लेटस भी हार्मोनिक मीन of focal distances of endpoints of focal chord. इसमें जैसे अभी हम जैसे फर्स्ट तो अलग है, सेकंड प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ऑल थ्री कर्व्स. थर्ड प्रॉपर्टी, टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. नहीं, थर्ड नहीं है. फोर्थ, foot of perpendicular from focus on any tangent always lies on tangent at vertex.
दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन एलिप्स एंड हाइपरबोला एज वेल, बट यहाँ पे टेंजेंट एट वर्टेक्स के प्लेस पे ऑक्सिलरी सर्कल आ जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी अगेन ऑल थ्री कोनिक्स के लिए एप्लीकेबल है। सिक्स प्रॉपर्टी एरिया से रिलेटेड प्रॉपर्टी याद है? No, sir. एरिया Can you ऑफ scroll up a ट्राइंगल। little bit? Oh, yes, sir. No, no, sir, just the circle point I have to copy. ओके, नोट कर लो। Done, sir. एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय three tangents of a parabola is half of area of triangle formed by their point of contacts. एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, करेक्ट है? या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, करेक्ट है? तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आएगा गिवन पॉइंट नंबर 6 के अकॉर्डिंग? Sir, can you repeat what you said? Out of these two statements, which one is correct for this diagram? Sir, second. Area of triangle formed by tangents, which is triangle PQR, is half of area of triangle formed by their point of contact. तो जो ट्राइंगल के, जो पैराबोला के इनसाइड ट्राइंगल है, उसका एरिया एक बड़ा नंबर आ रहा है, आउटसाइड वाला छोटा ट्राइंगल बन रहा है। इसी डायग्राम में ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR lies on directrix and circumcircle of triangle PQR passes through focus. ऑल्दो ये जो स्टेटमेंट्स इनका कोई बहुत खास मैथमेटिकल यूज तो नहीं आता, बट हाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय थ्री टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला ऑलवेज लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड सर्कमसर्कल ऑफ दैट ट्राइंगल always passes through focus of the parabola. और एक प्रॉपर्टी और है, बट उसका भी कोई यूज तो है नहीं, नोट कर लेते हैं। चलो पॉइंट नंबर 7,
और यहाँ तक क्लियर है ना बात सारी? Yes, sir. Point number 7, if tangents at P and Q on parabola intersect at R, then RP and RQ subtends equal angle at focus and SR square, focus S है, SR square is equal to SP into SQ. अभी तो डायग्राम कोई बहुत अच्छा नहीं है, बट इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये फोकस है। और इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए क्या होगा, समझ आ रहा है क्या? We'll take point P and Q in parametric form T1 and T2. Then point R is A T1 T2 comma A T1 plus T2 and point S is A comma 0. अपन को all 4 point के coordinates पता है, तो हम PSR और QSR एंगल्स फाइंड कर सकते हैं स्लोप्स की हेल्प से। और सेकंड पॉइंट है कि SR स्क्वायर इज इक्वल टू SP इंटू SQ। तो सिंस अगेन 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डिस्टेंस का यूज करके SP और SQ तो डायरेक्टली A प्लस AT1 स्क्वायर और A प्लस AT2 स्क्वायर हो जाएगा। SR स्क्वायर के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा। एक ये भी है पॉइंट नंबर 8, ये इफ टेंजेंट्स at P and Q on parabola intersect at R, then and lengths of perpendiculars from P, Q and R on any other tangent are P1, P2 and P3. Then P1, P3 and P2 are always in GB. देखना स्टेटमेंट 8 समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? टेंजेंट्स एट P and Q इंटरसेक्ट एट R, तो जो ऊपर डायग्राम है वही हो गया PQR। तो अब हमने कोई सी भी एक अलग टेंजेंट बना ली, P और Q पे जो टेंजेंट है ना, उनके अलावा कोई अलग टेंजेंट बना ली। And on that tangent, if length of perpendiculars are P1, P2 and P3 from point P and Q and R respectively,
then P1, P3 and P2 are in GP. Point P से distance, point R से distance and point Q से distance. These three distances are in GP. ये सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस अपन देखें। फर्स्ट पॉइंट तो अपन अभी यहाँ पे प्रूव कर ही लिया। सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ये हमने ऑलरेडी पहले प्रूव किए हुए हैं। फिफ्थ भी प्रूव किया हुआ है, सिक्स भी प्रूव किया हुआ है। सेवंथ अभी बताया था कि पी क्यू और आर को, पी और क्यू को पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लेंगे। और एट वाले में भी सेम है, पी एंड क्यू को पैरामेट्रिक फॉर्म में लेंगे तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। फिर तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो डिस्टेंसेस फाइंड करनी पड़ेंगी। बट इन दिस केस पॉइंट नंबर 7 में तो नहीं होती कैलकुलेशन, पॉइंट नंबर 8 में कैलकुलेशन है। और ये वाले पॉइंट को प्रूव करने में कैलकुलेशन है। ये वाले पॉइंट अपन ने पहले प्रूव नहीं किए हुए हैं, तो तुम ट्राई करके देखना। इनको प्रूव करने में कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होती है, ये तो इजी कैलकुलेशन से हो जाता है, ठीक है। अभी अगर अपन इन पे बेस्ड क्वेश्चंस So एक can बार you देखें। scroll up a little bit just to the eighth point? So P1, P3 and P2 are in GP. P1, P3 and P2 are in GP. Okay, so done copy. पता नहीं हमने एक क्वेश्चन पहले किया है कि नहीं किया। प्रॉपर्टी बेस्ड, एक मिनट रुको। पैराबोला का साइन, चलो क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन में इस तरह से है, if foot of perpendicular from focus 3, 2 on any two tangents of a parabola are at 5, 1 and 3, 9. चलो 3, 0
3,0 3,0 तो 2 ही हो जाएगा. 1, -1. Find the length of LR of parabola. अपना चैप्टर वैसे ये थ्योरी वाइज कंप्लीट है और ये क्वेश्चंस प्रॉपर्टी पे करते हैं. तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी. So सेकंड तो पोर्शन ऑफ टेंजेंट वाला था ना, वो तो फोकस पे राइट एंगल सबटेंड करता है. so fourth then, no? फोर्थ लगेगा. हाँ, फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करो. ठीक, ये लाइन 2x नहीं, x minus 2y equal to 3 आ रही है. तो हमने टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन फाइंड कर लिया. अब फोकस पता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स पता है. फोकस गिवन है 3,2, तो हो जाएगा 3 - 4 - 3 अपॉन रूट ओवर 1 + 4. तो 16 अपॉन रूट 5 लेंथ ऑफ LR हो जाएगा. A parabola slides between coordinate axes. You have to find locus of focus of the parabola if length of LR is given as 4a. समझ आ रहा है क्वेश्चन? No, sir. What does sliding between the coordinate axes mean, sir?
This parabola is sliding between coordinate axes. अलग अलग अब रोटेट करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में स्लाइड करेगा. But in every situation, these coordinate axes will be tangents of this parabola, and we have to find focus of this parabola, locus of focus of this parabola. तो अगेन सेम ही प्रॉपर्टी जो अभी अपन ने यूज किया, क्या कि अगर हम फोकस से कोई भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर्स टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करेंगे. तो अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स h,0 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स 0,k हो गए, एंड प्रॉपर्टी से पी क्यू लाइन टेंजेंट एट वर्टेक्स बन जाएगी. ठीक है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू लाइन क्या आ जाएगी, x अपॉन एच प्लस वाई अपॉन के इक्वल टू 1. अब क्वेश्चन ने बोला कि लेंथ ऑफ एल आर 4a है, यानी कि इस लाइन पे फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक इक्वल हो जाएगा. h कॉमा के से नहीं, हाँ h कॉमा के से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, h अपॉन एच प्लस के अपॉन के माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1/h² प्लस 1/k². और ये एक एक को कर लेंगे तो लोकस आ जाएगा 1/x² प्लस 1/y² इज इक्वल टू 1/k². 1 हाँ ठीक है. कैलकुलेशन ठीक है ना मेरी. Yes, sir. So can you scroll up 1 second? Done, sir. T is a point on the tangent of parabola y² equal to 4ax at its point P. TL and TN are the perpendiculars on the focal radius SP and directrix. Then find SL upon TN is equal to SL distance और TN distance का ratio.
देखना पॉइंट P ऑन द पैराबोला लिया, पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ की, इस टेंजेंट पे कोई भी एक पॉइंट T लिया, and TL and TN are the perpendiculars on the focal radius SP and directrix. तो L वाला पॉइंट तो focal radius SP पे है और N वाला पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे है. We have to find ratio of SL and TN distances. इसको सॉल्व करने के लिए हमने PM को और ज्वाइन कर लिया और T से यहाँ पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर दिया. इसको हम कुछ Q बोल देते हैं. ठीक है. तो हमने अभी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि पॉइंट P पे टेंजेंट जो है ये PS और PM लाइन का एंगल बाइसेक्टर है. तो ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है. इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल, और ये ट्राइंगल PQT और ट्राइंगल PLT ये अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए. सॉरी. ठीक है. देयरफॉर वी कैन से दैट PQ इज इक्वल टू PL. ये तो यहां से बोल दिया. Also we already know that PS equal to PM. From this diagram, PS is PL plus SL, PM is PQ plus QM. Since PQ is equal to PL, therefore SL is equal to QM and QM is equal to diagram के according TM. QL, QL नहीं, QM. तो SL equal to TN आ जाएगा. Got it? Yes, sir. तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन, एक एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन और था. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का. ठीक है. क्वेश्चन इज circles are drawn with OA and OB as diameters, where O is origin and A and B are two distinct points on y square equal to 4x. These circles intersect at P if M1 and M2 are slopes of tangents
of parabola at A and B, and M is slope of chord AB, then option A. देखो इसमें अब बस ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है समझने का कि जो इन दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा पी, वो लाइन ए बी पे लाई करेगा, यानी कि ए पी बी आर कोलिनियर। ये डायग्राम से समझ के देखो, समझ आ जाएगा ए पी बी कोलिनियर अच्छा, क्यों है। बताओ क्यों है कोलिनियर। so focal chord. नहीं नहीं नहीं, फोकस पी पॉइंट एक्सिस पे नहीं है। Oh, so then I don't know. In this case, OA is diameter, OB is Yes, diameter, yes, sir. and P is on both the circles. So OAB should be right angle, and Yes, sir. this also right angle. तो अगर दोनों ही right angle बन गए तो फिर ये एक लाइन 180 डिग्री कंप्लीट हो गया। Yeah, understood, sir. तो A, P and B आर कोलिनियर, ये आ गया, और हैंड टू हैंड डी ऑप्शन भी आंसर आ गया। ठीक है, अब बी और सी में से कौन सा आंसर आएगा, कैसे आएगा बताना है। बी और सी के लिए पॉइंट ए को T1 और पॉइंट बी को T2 लिया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए कितना हो जाएगा, 1/T1। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी 1/T2। तो ये तो क्वेश्चन ने M1 और M2 बोला हुआ है। M क्या बोला हुआ है, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, और स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी 2/T1 + T2 होता है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2, 2x - T1 + T2y + 2a T1 T2 = 0 होता है।
इसको क्वेश्चन है m बोला हुआ है। देखो यहाँ से समझ आ गया कि 2/t1 का वैल्यू 1/m1, t2 का वैल्यू 1/m2 इक्वल्स टू m। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। समझ आया कंप्लीट सॉल्यूशन? Yes, sir. तो चलो यहाँ तक ही रखते हैं, अपना चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में होमवर्क, अभी तुम्हारे एग्जाम्स वगैरह ओवर हो गए? No, sir. They're going on from now until May, sir. ओके, तो होमवर्क के लिए टाइम नहीं मिलेगा क्या बिल्कुल ही? Sir, I'll try it, sir. I'll do something. ओके चलो ठीक है, मैं भी ये नोट शेयर कर देता हूँ। चलो बाय। Bye, sir.